How do you know the skincare that you are buying, especially from places like Amazon? क्या ये रियल है, ऑथेंटिक है, या ये काउंटरफीट है, या फेक स्किनकेयर है? स्किनकेयर का फेक होना is a big problem that the entire skincare industry is dealing with today, especially when it comes to marketplaces like Amazon, anywhere in the world, marketplaces like Flipkart in India. There are a few websites जो authorized हैं, like Nykaa, like Sephora, like Look Fantastic, like Cult Beauty. बट ज्यादातर जब हम कोई ट्रेंडिंग स्किन केयर प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, स्पेशली इन द कोरियन कैटेगरी, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिकॉज देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स दैट एक्चुअली आइदर सेल यू फेक प्रोडक्ट्स or old products or counterfeit products, and so many times you guys DM me on Instagram, हम ये ले रहे हैं, क्या ये सही है? And I can't really tell you because ना मेरे पास उस साइट का एक्सेस है, ना मैं उसके सेलर को जानती हूँ. How do I tell you that that is authentic or not? But as someone who buys a lot from Amazon, who buys a lot from marketplaces, and generally does all her most her shopping online, क्या है वो चीजें जो मैं ध्यान में रखती हूँ? How do I pick up my skincare? That is what I'm going to teach you in today's video. Hello and welcome to Skincare Simplified. मेरा नाम है निपुन, आपकी skincare bestie and a certified skincare consultant. Today I'm going to teach you how to identify real authentic skincare versus fake skincare. Before we get started, you know the drill. Like, subscribe if you enjoy science-packed daily content, क्योंकि मैं बनाती हूँ एक नई वीडियो every single day here on Skincare Simplified, the only channel on planet Earth जहाँ आपको मिलते हैं detailed skincare routines. We have channel memberships. We also have a monthly giveaway. Hit that subscribe button. One lucky winner can win 5,000 rupees worth of skincare products and a customized skincare routine. Now let's get into it. सबसे पहले हम डील करेंगे जो एक वेबसाइट है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, Amazon. Amazon is a marketplace. What does that mean? That means कि of course एक ब्रांड अपना प्रोडक्ट तो बेच ही सकता है, साथ ही साथ एज अ रीसेलर मैं, आप, कोई भी Amazon पे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं as long as we are stocking them. Amazon का एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है which is a marketplace program, जो उनका सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जहां पे वो सेलर्स को ऑनबोर्ड करते हैं. एनीबडी कैन बी अ सेलर, स्पेशली ब्यूटी स्किन केयर में रूल्स आर वेरी वेरी ग्रे. एनीबडी कैन बी अ सेलर एज लॉन्ग एज आपके पास प्रोडक्ट का ओरिजिनल बारकोड है जो बहुत आसानी से मिल जाता है. एज लॉन्ग एज यू हैव सम बेसिक डिटेल्स यू कैन एक्चुअली ऑनबोर्ड ऑन Amazon. नाउ यहाँ आती हैं दो प्रॉब्लम्स. नंबर वन इस दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है. नंबर वन, इज द प्रोडक्ट ऑथेंटिक या फेक है? अब फेक प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, एंड स्पेशली जो सुपर पॉपुलर ब्रांड्स होते हैं, ordinary. I will never tell anyone to buy any ordinary product from Amazon because ordinary के इतने fake बन चुके हैं that आज के डेट में maybe ordinary or Estee Lauder that owns the company ordinary will not be able to identify because they make such good fakes. So fakes is number one. Ordinary, Cosrx, the Korean brand, nowadays Beauty of Joseon, even Hemish. Any brand that is going super viral in the past 6-7 months, उसके fakes फटाफट बनने शुरू हो जाते हैं, and people will start selling it on websites like Amazon. In the GCC we have a website called Noon which is very similar. इस पे भी आपको बहुत fake products मिलते हैं. So सबसे ज्यादा आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप बाय करें फ्रॉम ऑथराइज्ड रिटेलर्स. इंडिया में ऑथराइज्ड रिटेलर इज अ कंपनी कॉल्ड नायका, इज अ कंपनी कॉल्ड सेफोरा. दीज आर ऑथराइज्ड रिटेलर्स जिनके साथ ब्रांड्स डायरेक्टली डील करते हैं. सो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें दैट यू बाय फ्रॉम दीज वेबसाइट्स. नंबर टू, अगर आपको Amazon से खरीदना है, एंड नाउ कम्स द फन पार्ट ऑफ द वीडियो, हाउ डू यू नो व्हेन यू आर ऑर्डरिंग अ प्रोडक्ट फेक है कि नहीं है? Number one, always look for the prime sign, which is fulfilled by Amazon. जो products Amazon खुद fulfill करता है अपने warehouse से, वो products होते हैं that go through rigorous checking. अगर कोई ऐसा product है which is being shipped by the seller, जो आपको नीचे दिख जाता है, it's going to be shipped by the seller, that could be right, that could be wrong, but if a product is fulfilled by Amazon, यानी कि Amazon के warehouse से आ रहा है, एक blue check होता है fulfilled by Prime, then you know that that is going to be, that has a higher chance of being authentic. That's number one. Number two, always look at the reviews. Okay, अगर आपको Cosrx के sunscreen पे दिख रहे हैं 10 reviews and आपको दिख रहा है 3.5 star rating, go and read.
उसी से आपको पता चल जाएगा कि लोगों का एक्सपीरियंस क्या था. बट अगर आपको दिख रहे हैं 10-15,000, 5,000, whatever, you're seeing good ratings, 4.5 star, chances are that that product is going to be authentic. Number 3, आपको दिख जाता है कि ये प्रोडक्ट कितने टाइम से लिस्टेड है. सो इफ यू हैव बीन सीइंग अ पर्टिकुलर सेलर जो अगर, एंड दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितने टाइम से लिस्टेड है और कौन लिस्ट कर रहा है. जब आप देखते हैं कोई सनस्क्रीन एंड या कोई भी प्रोडक्ट, यू कैन क्लिक ऑन द सेलर. सेलर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको दिखेंगे कि वो सेलर और क्या क्या बेच रहा है. नाउ इफ यू सी दैट सेलर सेलिंग रैंडम थिंग्स लाइक लाइटर्स, लॉन्जरे, अनरिलेटेड थिंग्स, लाइक वो एक ऐसा सेलर है जो बहुत अलग अलग चीजें बेच रहा है, लाइक राइट फ्रॉम अ frying pan to a sunscreen, then that is not an authentic seller because that is an aggregator. वो इंसान या वो शॉप या वो सेलर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ इकट्ठा कर रहा है and they are just putting it on Amazon. Chances are they're not the right. But if you actually see a seller जो ज़्यादा beauty related, skincare related, makeup skincare related products ही बेच रहे हैं, 99% of the products they have listed are beauty related and seller की भी एक ranking होती है, then you know that it is going to be an authentic product. That is a simple way of figuring it out on Amazon. ये सारा का सारा logic is true for Noon अगर आप GCC countries में रहते हैं and you shop from Noon. So you have to look at the ratings. You have to look at कौन fulfill कर रहा है, is Amazon fulfilling it or is the seller fulfilling it. Number 3, you also need to see कि वो seller और क्या क्या बेच रहा है. That's a simple way of figuring it out. ये 3 चीजें अगर logically cross check करती हैं, they meet your expectations, then chances are that is an authentic product that you can get from Amazon. But फिर भी अगर आपके पास option है to go to a more authentic website, that's where you should shop from. And by the end of this video, I'm going to give you a whole list, so don't worry about it. So Amazon is this one thing. The second thing that I did, and ये मैंने बहुत किया sometime between 2020 and 2021 because that is when skincare was booming, online was booming. Amazon had a new product every single day and I was just very very confused. मैं personally brands को DM करती थी Instagram पे, and even that time like Instagram पे तो I barely had any followers, maybe like 7-8,000 कुछ followers थे. I was not like any kind of an influencer, but brands reply. I would actually reach out to them and saying, is this shop, and फिर मैं shop का link देती थी या hyperlink देती थी from Amazon का, is this an authorized seller? And most times brands would come back and saying yes, no, or I would ask them कि आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिया में who's an authorized seller, and they would help me with a link. So they would tell me other websites. And इस तरीके से you can actually figure out where to get your products from. When you're shopping on a marketplace, you have to be very, 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 very careful. And एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, सुपर पॉपुलर ब्रांड्स Amazon से कभी मत लें unless the brand is officially listed on Amazon. Amazon US is a very different case. Amazon US पे ऑर्डिनरी के ऑफिशियल स्टोर्स हैं, कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऑफिशियल स्टोर्स हैं, एंड यू कैन ऑब्वियसली सी दैट एंड मेक योर डिसीजन. बट इन मोस्ट केसेस, स्पेशली इन मार्केट्स लाइक इंडिया एंड इवन इन द मिडल ईस्ट, Amazon इतना रेगुलेटेड नहीं है, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. Having said that, I literally get a box from Amazon pretty much every 2-3 days. Now, what are the authentic websites that you can buy from? सबसे पहले we're going to deal with India. Nykaa is number 1. Number 2, you've got Sephora. So ये दो आपके websites हैं जहाँ से आपको buy करना चाहिए. Even if you feel the product is a little more expensive, you don't want to put anything wrong on your face. So Nykaa and Amazon. Nykaa and Sephora. उसके अलावा, if you're wanting to buy Korean products specifically, there is a website, a global website called YesStyle. YesStyle ship करता है to India. थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी ड्यूटीज लगती हैं, बट दे शिप ऑथेंटिक प्रोडक्ट. YesStyle even ships everywhere in the Middle East. So YesStyle is one website जिसको मैं बहुत यूज करती हूँ. In fact, all of the Riedel Shot, Medicube, anything new and trending that I have actually got, I have got it from YesStyle. So YesStyle is another website that you can use. In addition to that, Korean websites हैं called Stylewana, which also ships to India, जिससे आप यूज कर सकते हैं. There are a lot of Instagram stores, right? Instagram पे बहुत सारे stores हैं that sell. Now, Instagram store के authenticities के बारे में honestly I cannot comment because Instagram store पे जो products आपको मिलते हैं, these are basically people called stockists. वो बाहर से बहुत सारे bulk में products खरीदते हैं, trending products खरीदते हैं, and they stock it, and उसके बाद वो आपको ship करते हैं. But the point is, sometimes this product could be a little old. It could be closer to expiry. अगर एक product
खुला नहीं भी है, बट लेट्स से इट वाज प्रोड्यूस्ड इन 2022, उसकी शेल्फ लाइफ इज टिल 2025, आपने 2024 मिड में खरीदा तो मतलब आपके पास तो 6 महीने का ही टाइम रह गया उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। इंस्टाग्राम स्टोर्स यूजुअली बाय करते हैं होलसेल मार्केट से, बाय करते हैं दूसरे होलसेलर से, सो समटाइम्स इन माय एक्सपीरियंस दे हैव प्रोडक्ट्स दैट आर ओल्ड व्हिच आर क्लोजर टू एक्सपायरी, सो दैट इज समथिंग that I cannot comment on, and इसलिए मैं Instagram stores को recommend नहीं करती unless I really know that this Instagram store is authentic. Another website that now ships to India is iHerb. iHerb is a global website. Again, उनकी shipping happens from different points. They ship from the UK, United States. उनके दूसरे भी stocking hubs हैं. They have warehouses across the world, and this is also a very authentic and a good place to get your products. And personally, iHerb I feel has good prices. उनके prices इतने ज़्यादा expensive नहीं होते, and the product is authentic every single time. I have been buying products from iHerb since 2021, and I've never really had a bad experience from them. In addition to that, a website that I do want to mention specially is called Style.e. Now, Style.e is a website in India जो इंडिया में products आपको provide करती है brands like Drunk Elephant, brands like Caudalie, a lot of products जो आपको usually Nykaa पे नहीं मिलेंगे, you will not get it in Sephora, you will get it on Style.e. Now, Style.e is a website that I have learnt about through you guys. A lot of my followers, a lot of my subscribers, जब वो मुझे अपने products के बारे में बताते हैं, and I say, how do you get it? Because मुझे पता है इंडिया में नहीं मिलता, they tell me that they get it from Style.e. Whatever reviews I have heard about Style.e till date have been positive. The only negative about Style.e is that अगर आप डॉलर प्राइस, जो रिटेल डॉलर प्राइस है प्रोडक्ट की, उससे उसको कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज में, ऑब्वियसली द प्राइसेस आर मोर देन डबल इन सम केसेस, बिकॉज ऑब्वियसली वो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं आप तक वो प्रोडक्ट पहुंचाने का. सो इफ यू रियली लुकिंग एट ब्रांड्स लाइक पीटर थॉमस रॉथ, SkinCeuticals, you're looking at Drunk Elephant, you're looking at Glow Recipe, all of these brands you can actually get on Style.e. Style.e भी एक authorized retailer नहीं है, but in my experience, from whatever I've heard, the products are authentic. So if you're in India, your options are obviously Sephora, Nykaa, Style.e, Stylewana, Yes Style, and आप Amazon से भी ले सकते हैं अगर आप वो सारे checks करें जो मैंने वीडियो के शुरुआत में mention किए थे. Now let's come to the websites in the Middle East. Yes, in the Middle East we have a lot of great options. We have lookfantastic.ae जो mostly products ship करते हैं from the GCC, but कुछ products they actually come cross border from the UK. Look fantastic, 100% authentic, and इनके prices भी कम होते हैं. Number 2, obviously Sephora. I buy most of my skincare from Sephora. Another website which is great, जिस पे बहुत amazing deals होते हैं and people don't know about it, is Faces.com. Faces.com is a authorized retailer. उनके stores भी हैं, ज़्यादा stores नहीं हैं, but they do have stores, and they literally have a lot of your good skincare. So if you're wanting Estee Lauder, Clarins, if you're wanting any of the high-end brands, shop from Faces.com. And I always say कि online shop करें because they always have great minis and bags and stuff like that. So it's a great experience. इसके अलावा obviously you have Namshi in the GCC, which also is an authorized distributor. Yes Style, Stylewana, iHerb, Cult Beauty. Cult Beauty is another fabulous website that ships from the UK, and for the longest time till 2022, because 2022 में एक switch हुआ था Middle East में, where Sephora started getting more brands from the more American brands, more trending brands quickly. उससे पहले even for Sephora to get brands, it used to be a little bit of a slow process. But since 2022, Sephora has been killing it. Anything that's hot and trending outside, we get it here in Dubai. So अब मैं Cult Beauty से इतना ज़्यादा order नहीं करती, but previously I'm talking about 19, 20, 21, Cult Beauty was my favorite to order products. So these are some of the favorite websites that I like to order from. Now I'm going to talk about Australia very quickly because I've heard some feedback कि मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में कभी बात नहीं करती. All my friends in Australia, anything drugstore related, CeraVe, Cetaphil, Neutrogena, Olay, Chemist Warehouse, authorized distributor, you have Mecca Cosmetics, and you have Sephora. ये हैं आपके authorized, these are your authorized places where you can get your skincare. In addition to that, if you're in the United States, you're in Canada, you are in luck. Because most of these brands do ship across United States and America and Canada, so आप directly brand websites से order कर सकते हैं. I always find ordering from brand websites directly is one of the best things because number one, you're supporting the brand, right?
if you really love a brand and उनकी अपनी brand website है, you must shop from the brand website, because when they are on platforms like Sephora or Amazon, उनको एक margin देना पड़ता है जो उनके profits को cut करता है. So support a brand, shop directly from the brand website. Number 2, they always give you gifts on purchase, which is, I think, amazing. So if you're in the United States, you're in Canada, shop directly or shop from Sephora. You have Ulta Beauty, you have Walgreens, you have CVS. The ones who live in the United States actually have the best deal because you have such great places to shop from. If you're in the UK, you know it. Boots is your answer to everything, right? Uske alawa, yes, Amazon is very popular everywhere in the world, and I'm not saying I'm against Amazon. Like I said, मैं खुद Amazon से बहुत shop करती हूँ, but जो मैंने 3 चीजें आपको बोली थी, ratings, who is the seller, and who is fulfilling it. As long as Amazon is fulfilling it, usually chances are that checks and balances are in place. So I hope this video was helpful. आपको shopping में आसानी होगी. You'll be able to identify fake versus real product, authentic skincare versus fake skincare. वीडियो पसंद आई, let me know in the comments. आप कौन सी वेबसाइट से शॉप करते हैं जो ऑथेंटिक है. एक ना लिस्ट बनाते हैं. अगर आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है फ्रॉम वेबसाइट्स इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम स्टोर्स, बिकॉज आई डोंट वांट टू लाइक पेनलाइज इंस्टाग्राम स्टोर्स, इट्स जस्ट दैट आई डोंट नो अबाउट देम. अगर आपका किसी भी वेबसाइट इंस्टाग्राम स्टोर से अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लिस्ट डाउन दोज वेबसाइट्स एंड लिस्ट डाउन योर कंट्री. ओके, कि किस कंट्री से आप बात कर रहे हैं. इन दैट केस हम ना एक अच्छी सी लिस्ट बनाएंगे एंड हम उसे कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देंगे. सो एनीबडी टुमारो हु इज कंफ्यूज्ड विल बी एबल टू गो बैक टू द लिस्ट. आई थिंक दिस इज एन एक्टिविटी जो आपको और मुझे एक साथ करनी चाहिए. सो लेट्स डू इट. मेक अ लिस्ट, write down in the comments आप कहाँ से शॉप करते हैं, where have you had a good experience, and mention your country, and let's build this together. I'm going to see you tomorrow with a brand new video. Question का आंसर देना मुझे, and take great care of yourself. Bye.